Hi guys, am I audible? Yes. Okay, cool. Okay guys, so we have a short class today. We don't have too much topics. Okay, guys, we have learned many type of testing till now, right? Guys, anyone tried doing exploratory testing on any website or any project? Any one of you? Guys, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो फायदा क्या पढ़ाने का? I hope you guys are trying the testing techniques we have been learning in the class, right? Yes, sir. I have tried on Twitter. Okay, Sujit, cool. Okay, great. Okay, so today we don't have many topics today. We have small topics, and after that, I have a announcement of two new batches. Okay, so we will be going through the roadmaps of those two classes. Okay, so before let me just complete this. Okay, 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 guys, just okay, guys. I guess my screen is shared, right? Okay, guys. So we have the first topic as equivalence partitioning. क्या समझ आता है गाइस इसका नाम सुन के? व्हाट इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग? नाम से क्या लगता है? व्हाट डू यू फील बाय जस्ट हियरिंग द नेम? सर अगर दो दो क्यूए हैं तो सेम डेटा वो लोग डेटा आपस में शेयर करके सेम फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं और इशू निकालते हैं अलग अलग। नहीं भाई, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एनीवन यार, डोंट वरी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत आंसर होगा। प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस। Just get your mind through this word equivalence partitioning. What do you get through this word? Invalid cases. No, I don't feel like something like that. Guys, what do you understand by equivalence? Equivalence. And just let it be two words, okay? Equivalence and partitioning. What do you understand by these two words differently? Equivalent means similar, kind of equal. Someone use similar. Similar. Someone use similar. Who used this? Sir. That's something relatable. And what do you understand by partitioning? To divide. To divide. Right. So guys, I will show you what's equivalent partitioning. Okay. Okay. Let us go to a. Mm, okay. Okay. Where should I go? Yeah. Where should I go? Mm, okay, guys. Let's go to Facebook only. Okay, guys. Let leave Facebook. I am just opening my notepad. Okay. I will show things on notepad. That would be much. You will get better understanding. Okay, guys. Just think of it. You are testing a field which accepts age. Okay, which accepts age. All right, guys. So guys, just when you will add a negative age, like less than zero, it will throw an error. Age cannot be
less than 0. Okay, and when you will be putting in age more than 100, you are too old to use this application. Okay guys, so these are two scenarios. Let me enter one more scenarios. When you will be adding a valid age, what will be the valid age? What will be the valid age? Rest of all the scenarios, I mean, in between 1 to 100. Okay, 1 to 100. Okay, 0 itself itself is a negative scenario, because age cannot be less than 0 or 0. Okay, age cannot be 0, right? Okay, so give me a thumbs up if you understood. Okay, so then it gives the output valid age. Please enter rest of the details. Okay guys, give me a thumbs up if you understood these two scenarios, these three scenarios. Okay, I am increasing the size if anyone is not able to see this properly. Okay, I guess this is fine now. Okay guys, so tell me, what will be the output if I will be inputting -1? Guys, just think of them, that these are three categories. Okay, this is category 1, and this is category 2. Okay, and this will be category 3. Okay, fine. So what will be the output? Just tell me the category, where this is supposed to be. Okay, if the input is 1, what will be the output? Category 1, 2, or 3? 1. Okay, I want everyone's answer. I want everyone's answer. Okay, either type it in the chat box or speak it up. Okay, Is it, sir, is it -1 or 1? it's -1. So category 1. Category 1. Okay, all right. Category 1. Okay, and what will be the output for -5? Again, category 1. Okay, cool. And what will be the output for 0? Category 1. Okay, and what will be the output for -1000, 10,000 or 1000? Same, sir, 1. All right. So all these will be category 1, right? Okay, you got it, right? You got it. This will be category 1. Okay. Okay, and if I will be inputting 101, then what will be the output? What will be the category? Number 3. Number 3, Number right? 3. And what will be the output if I enter 300? Same, number 3. Number 3, right? Okay, and what will be the output if I enter 1000 or 10,000? Number 3. And what will be the output if I enter uh, okay, that's fine. These are enough. So for all these, the result will be category 3, right? Okay, right? Okay, guys. Okay. And what will be the output for 1? Category 2. Category 2. Category 2. What will be the answer for 100? Category 2. Any number between 1 to 100 will have result. Any number between 1 to 100 will come under Category 2. category. Guys, I guess these are approximately 100 numbers. Okay, that would be approximately 100 number in between 1 and 100, right? Okay, okay, am I right? 100 numbers, which means 100 inputs, right? Right, guys? And
there are infinite numbers more than 100, right? So infinite inputs, right? Right? And there are infinite number less than 0, right? 0 plus infinite number less than 0 is again infinite, right? Which means infinite inputs, right, guys? Give me a thumbs up if you understood everything till here. Okay, so a total of how many? A total of inputs? Infinite plus infinite plus 100. This will be again equal to infinite inputs, right? Am I right, guys? This will be again equal to infinite inputs. Give me a thumbs up, guys, if you understood that there will be infinite inputs. Okay, guys, now tell me, if I am going to put any number less than 0 or 0, will the answer be same every time? Okay, before I explain this, I just want to ask you, I just want to you guys to use your own brain, how you are going to test infinite inputs. How you are going to test infinite inputs. We will separate the data. We have already separated the data, Niket. We have category 1, 2 and 3. विभूति आपने सिमिलर वर्ड यूज किया था, कुछ याद आ रहा है उससे? कुछ रिलेट हो रहा है? कैन यू रिलेट समथिंग विद दैट? No, sir. ओके, तो गाइज मुझे एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग. इफ आई विल बी if I will be inputting any number less than 0, that will fall under category 1, right? Am I right? Give me a thumbs up, guys, if I am right. If I will be inputting any number less than 0 or 0 itself, then the output will fall under category 1, which will be age cannot be less than 0 or 0. Right? Give me a thumbs up, guys, if you understood this. Okay. So for any number, if the output will be same, for any number, if the output will be same, can I just test one input and say I will just test minus 1000 and 0. Okay. And will say that category, whole category 1 is successfully passed. Okay. If 0 and minus 1000 pass correctly, okay, if 0 and minus 1000 pass correctly, then I will say category 1 passed. Am I correct, guys? Am I correct, guys? You tested infinite inputs just by inputting two inputs, right? This is called equivalence partitioning. A category will have the same results for all the inputs. Okay, just pick up random inputs, one or two random inputs, test them, and for whole category the inputs will be same. Okay, the output will be same. Okay, if these two inputs are passing, then the whole category will pass. Did you guys understood this? And this is same for category 2 and 3. If I will input here 2 or 3 or 4 or any number between 1 to 100, the answer will be same. The answer will be same. Valid age, please enter rest of the details. Am I right? So category 2 also passed. Right, guys? Am I right, guys? Give me a thumbs up if every one of you understood this concept of equivalence partitioning.
we will make three partitions, three category. This is not important that you will be making three categories. That depends on your intuition, how many categories you want to make. Okay, that's on your intuition. Okay, you have to use your own brain here. Okay, guys. So I guess this is understood by everyone. Okay, I just want a thumbs up from everyone if this is understood by everyone. Okay, 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 cool. So this is understood by everyone. Okay, guys. Tell me, do you want this document in the notes, or you are okay with this? If you want, then let me paste the screenshot for this in the whiteboard. Do you want this document, or that's fine? You can do it without this. Okay. So I will just take a screenshot of this and will paste this. Okay. Okay, guys. So हमारा अगला टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. हमारा अगला टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस गाइस? बाउंड्री से क्या समझ आ रहा है, वैल्यूज से क्या समझ आ रहा है, इनपुट से क्या, एनालिसिस से क्या समझ आ रहा है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड BVA in the short form. Its abbreviated name is boundary value analysis. So what do you understand by this, guys? Boundary value analysis. Again, guys, I don't want to know exact definition or anything. I just want you guys to think about it. That क्या हो सकता है boundary value analysis? I want कि तुम्हें सब चीजें नाम से याद रहें. ठीक है? You need not to search again and again, Google it. Okay, just तुम्हें नाम से याद आ जाना, नाम से समझ आ जाना चाहिए कि what is this. Okay. सर अगर किसी फील्ड में 18 एज तक का एंट्री है, मतलब मिनिमम 18, तो हम ऐसा एज ईयर डाले जिससे एज 17 हो, और मैक्सिमम अगर 70 है तो ऐसा डाले एज की वो 72 Exactly, पहुंचे exactly, तो Niket, exactly. Testing the boundaries of a field. Okay, testing the boundaries of a field. ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि डेवलपर्स हमेशा एज केसेस हैंडल करने में गलती कर देते हैं यूजुअली. ओके, यूजुअली मिस्टेक्स आर डन व्हाइल हैंडलिंग एज केसेस, गाइस, व्हाइल हैंडलिंग एज केसेस. एज केसेस कौन से होते हैं? बाउंड्री के केसेस. ओके, अगर कोई फील्ड है दैट इज एक्सेप्टिंग 18 ईयर्स ऑफ एज, और अगर किसी की एज लेस देन 18 है, तो दैट फील्ड शुड थ्रो अ एरर. ओके, दैट फील्ड शुड थ्रो अ एरर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, तुम फेसबुक में जब एक नया अकाउंट क्रिएट करने जाते हो, यू कैन नॉट एंटर लेस एज देन 13 और 14, आई गेस. ऐसा कुछ है वहां पर. आई डोंट नो, हमारे टाइम में 18 था, बट अभी आई डोंट नो क्या सिनेरियो है उसका. ओके गाइस, सो गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस, कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है. You just need to test the boundaries. Okay, okay. If I talk about the same scenario, there is a field that accepts 0 to 100. Okay, I am writing here BVA. Okay, so what will be the values you will be testing? बताओ, कौन बताएगा? What will be the values to be tested? Okay, 0. 0 plus 1. 0 minus 0.1. नहीं नहीं, decimal नहीं, integer values only. 1. 1. Okay, 1. And what else? Minus 1. Minus 1, good. 99 and 100. 99 and 100. And 100 will not. Right. 0. Right, guys. So these will be the values that will be tested during boundary value analysis. Okay, guys. Okay, guys. Do you understood this? Okay. Give me a thumbs up if you understood this.
ओके, थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ लेते हैं यार, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं मिस होने वाला इसमें। Okay, so the basic definition is focusing on the testing the boundaries between the partition, as error often occurs at edge values. As I said, developers usually mistake on handling the edge cases. Okay. Okay, so includes values at just below and just above. See, 0 is the value, just value, 1 is just above, and minus 1 is just below. Okay. 99 is just below, 100 is at, and 101 is just above. Give me a thumbs up, guys, if you understood this. Okay, guys, decision table testing. What do you understand by this? What do you understand? Decision table testing. Condition like true and false means एक एक करके यार, एक एक करके। प्राणिता आप बताओ। we are checking the conditions like true and false. Means, Kind of suppose true, email kind of ID. true. Okay, kind of true. Okay, Sujit. Testing that should not be done, Masud sir. There are some limitations like भाई तुम्हारी ना आज आवाज सही से आ नहीं रही है मुझे, तो आई एम नॉट एबल yeah, टू अंडरस्टैंड योर आंसर्स एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो लेट इट बी, वी विल डिस्कस इट। ओके, बिफोर आई डिस्कस इट, एनीवन एल्स वांट टू आंसर? uh, different input combination. How different input हाँ combination हाँ, are you are true, Bhagavati. You are true. We'll be testing a table basically. We will be testing a table. We will be provided with the table, and we will be inputting it different values, and we'll be writing output against the inputs. Okay, we'll be basically having true or false things. Okay, we will see. Okay, so let's see this. Okay, okay, मैं सीधा एग्जांपल पे आ रहा हूँ। ठीक है, द सिनेरियो इज वी हैव टू टेस्ट अ डिस्काउंट फीचर बेस्ड ऑन यूजर टाइप एंड परचेज अमाउंट। ठीक है, तो हमें इस तरह की ना एक टेबल बन मिनी मिल जाएगी। ठीक है, वी विल गेट अ टेबल लाइक दिस। दिस विल बी, या तो हमें खुद बनानी पड़ेगी बिजनेस डॉक्यूमेंट देख के, आइदर वी हैव टू क्रिएट इट बाय लुकिंग इनटू द बिजनेस डॉक्यूमेंट। ओके, और बिजनेस एनालिस्ट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस। ओके, सो सी, if user regular है, if user type is regular and his purchase is more than $100, then he or she should get 10% discount. And you will be testing the conditions according to this. The user type should be regular, his purchase amount should be greater than $100. If these two conditions are true, if these two conditions are true, then this third condition should be implemented. Okay, then he should get 10% discount. And if this condition is being implemented, he is getting 10% discount, then the user should have a purchase of more than $100, and user type should be regular. So this way and vice versa. Okay, give me a thumbs up if you got this. Okay, everyone got this, or I need to explain it once again? Okay, let me explain more answers. Let me explain more inputs. The user type is regular, but his or her purchase is not more than $100. Okay, so the discount will be zero. Okay, so this discount will be zero. Okay, just suppose we are not testing this way. We are not testing this way. Sorry, we are not testing left to right. We are testing right to left. If the user is having 0% discount, then these two fields must be true. His or her purchase should be less than $100, or and the user type should be regular. Okay, okay, give me a thumbs up if you understood this now. I guess now you must have understood this. Pranita, Niket, I am not seeing your thumbs up.
Do I need to explain one more example? Okay, cool, cool, cool. Okay, so you understood this, right? So this is a technique to test complex business rule by creating a table of inputs and expected outputs. Okay, as I said, key points represent conditions input and actions output. So here, user type and purchase were the conditions, and discount given was the output, right? Okay, ensure all combinations of conditions are tested. So if here are four conditions, we need to test all the four conditions. Okay, all the four conditions, right to left and left to right. Okay, give me a thumbs up, guys, if you understood this. We already did this example, right? Okay, so now this is a state transition testing. What do you understand by state, guys? What do you understand by state? What do you understand by state? Sorry, Sujit, can you please repeat? It's category. Kind of. Anyone else? I want more relatable answers. Any one of you guys, any one of. How application changes its state. This is more relatable. Anyone else? Pranitha, Niket, Krishna, anyone else? डिफरेंट डेटा टाइप में कैसा डिफरेंट बिहेवियर है Yeah, data से related कुछ भी नहीं है इसमें. It has nothing to do with data. Guys, Spotify use किए? टॉप टू बॉटम अप्रोच अबे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप कहाँ आ गया है इसमें? इंटीग्रेशन में होता है वो. स्पॉटिफाई यूज किया सभी ने. उसमें दो स्टेट्स होती हैं, एक प्ले और एक पॉज, राइट? एक उसकी प्लेइंग स्टेट होती है और एक उसकी पॉज स्टेट होती है, राइट? यू विल सी, यू गाइस विल सी कि तुम जब भी स्पॉटिफाई यूज कर रहे हो, तो जब तुम प्ले करते हो, तो as the song is iterating, the lyrics are also iterating with the song, right? Right, guys? And when you stop the song, when you pause the, when you push the pause button, the lyrics also stop, right? So these are two different states, play and pause, right? Let me give you one more example. Everyone has used Instagram, right? There is one state that is logged out state, and another state is logged in state, right? When the user enter credentials and logged in, then you are into the logged in stage, and when you just push the log out button, then you are into the logged out state. Okay, so basically you will be testing two states, logged out state and logged in state. So you understand what are states, right? What are states? Give me a thumbs up, guys, if you understood what states. That's simple. That's very simple. That is not of very much like important in interviews, but you just need to know it. Okay. Okay, guys. So you guys are good with it, right? Okay. So let's go through this once. Okay. So okay, testing the application behavior when transitioning between the states based on events or inputs. Okay. What are the key points for this? Useful for system with finite states. Okay, useful for systems with finite states. Identifies valid and invalid state transitions. Okay, guys, there might be chances, right? When you are logging in, it's taking you to some another page. Okay, it's taking you to some another page, but that's not correct according to state transition, right? That will won't be correct according to state transition, right? Okay, and
Let's see a scenario. Okay, testing a login system. There are two states: logged out and logged in. If you logged out, then you have to enter correct credentials, and logged in. This is the one flow. And when you are logged out, enter the wrong credentials. You should be staying logged out, right? These are some of the states. Okay. Okay, guys. So we are just left with one: error guessing. What do you understand by error guessing? Predicting the error by just looking to software. Your first line was very Based correct, on our predicting the experience. error, but not into looking software, by your own intuition. Okay, by your own intuition. Okay, Test experience. that depends on your experience, right? Error guessing depends on your experience. Once you are very once when you will be testing, when you will be into testing, and then you know how your developers write the code, where they usually made some mistakes. Okay, then you know, then you have an intuition that this person can make the mistake here, right? And also it depends on your experience, right? Some of the test cases only you know, not everyone knows. So you know your developer is not going to handle this case, right? So you know. Am I right, guys? Okay, guys, cool. Okay. So let's look into its theory once. Okay, then we are done for today's class. We will be discussing few more points. Okay. Okay. Technique where testers use experience and intuition to identify error-prone areas of application. Okay. Okay. What are the key points? It's non-structured process. This completely relies on your knowledge. Okay. This will come with your experience. Usually freshers don't ask about it. Okay. This usually comes with the experience. Okay, often used alongside with other techniques. Like there is an input field. You know, many developers usually it's a first name field. Many developers usually forget to handle special characters and numbers in a first name field. And I have seen this many times. Okay, so this is some of error guessing things, right? Special steps for effective error prone guessing: brainstorm potential problem areas. You know what can be the problem areas of your application, as you will be the tester for it. Okay, there's common mistakes like invalid inputs and missing fields, right? Identifies issues that structured testing might miss. Okay, so these are some key concepts. Okay, guys, so before I start something else, I have few things to discuss right now. Okay, before I look into it, I just want to know any doubts still here. Okay, guys. So do one thing: go and practice them. Okay, you are not allowed to go right now. Okay, I just have few things to discuss. Okay, so okay, guys. So guys, you see this? This is our roadmap sheet. So I'm basically going to announce two new courses. Okay, we you guys are already familiar with API testing. Okay, the first is Selenium with WebDriver with Java with frameworks. Okay, so I just want you to go through this. I will be explaining it right now here. I just want you to know that what will we will be covering. See, you guys can see it's 63 topics here. Okay, so we will be covering all of them. All of them. If I'm saying all of them, then we'll be covering all of them, and all of them we will be covering live projects. Okay, we'll be doing coding live in the class. Okay, so we will be starting with very basic: what are Selenium features. Okay, then we will be learning what's the Selenium WebDriver architecture, how things are working in the back end. Okay, then we'll be
setting up some. Then we will be Ankit, can you please mute? Cool, thanks. Okay, then we will be setting up a project, a Maven project. We will be learning Maven in the later sections, in-depth Maven, and what are dependencies. We will be learning this, and then we will be learning core concepts of browser driver classes and web driver interface. Okay, guys who have attended my Java sessions, I guess both of them have left the class. No worries. Okay, then we will be learning getting started with web driver basic methods. Then we will be starting doing some codings with second or third session. We'll be starting with some codings. I have designed this course that will be implementing practical situations from very starting. Okay, so we'll be starting coding in second or third lecture. Okay, and we'll be seeing how to run tests in different browsers. We will be running the automation test in the Edge and Firefox. Okay, then we will be seeing what are locators. Guys, whenever, see, let me explain you this. You just think of this, that I want to click on this setting button. Okay, Selenium cannot just, I cannot give a command to Selenium, go and click on this setting button. This settings button will have a locator inside its code. Okay, where do we find its code? When See, when I press inspect, you guys can see HTML coding for this. Okay, see, whenever I am hovering over the things, okay, you guys see there is a highlight. See, whenever I am hovering over some code, there is some part getting highlight. See, whiteboard is whiteboard will get highlight somewhere. See, whiteboard is highlighted. So I am right now hovering over the whiteboard locator. Not exactly locator, I am actually highlighting over the code for this. Okay, HTML for this. And out of this, we will be extracting the locators. Okay, how do we extract the locators out of this? Okay, and there are like 14 to 15 ways to extract a locator. We'll be studying all of them. Okay, all of them. We'll be then not just this, these techniques, we'll be learning advanced locator identification and how to pass some strings during a automation, and then also interview questions on जितना part हम तब तक कर लेंगे. This will be, I guess, up to 10th session we will be completing all this. Okay, not 10th session, I guess 5th or 6th session. The classes will be actually 2 hours, so we'll be completing 4 sessions in 2 days. Classes will be only on weekend. Okay, the classes would be on 12 to 2, 12 p.m. to 2 p.m. Okay, we will be doing classes only on weekends. Okay, then automating browser navigation and window properties. You guys, I will tell you what's browser navigation. See, there is a backward button, and there is a forward button, and there is a refresh button. All these are navigation buttons. Okay, all these are navigation button. We'll look into this how to control them, and see, these are some browser properties like zooming in and zooming out. Okay, full screen, we'll be looking into all of these. Okay, all of these things. Many there are many other properties also, so we'll be looking into all the properties. Okay, and basic click and entering automation, everyone can teach this, like clicking on any element or entering something into any field. Okay, this is the basic automation, everyone can teach this. Okay, then we will be doing handling drop down menus, and there are many different types of drop down menus. Okay, I will show you. Okay, you see, this is also a drop down. Okay, not actually. This is not actually a drop down. Mm, let me see if this has some. Actually, I see some drop downs now. You guys can see more here, right? This more has some different options. This is a static drop down. This is a static drop down. Okay, and this is a dynamic drop down. There is, see, any drop down will occur when I will choose one option.
this the drop down depends on my actions, right? This is dynamic drop down. So we'll be looking into it how to automate these, okay, static and drop downs, okay, and handling number of clicks using loop. See, any automation guy can teach you how to click this 5 times. He will tell you to click this 1 2 3 4 5. Okay, click the write the code 5 times and this will be clicking 5 times. But my Java guys knows that we have learned for loop and while loops. Okay, so we'll be learning it using loops, how to repeat the actions using loops. Okay, then handling drop dynamic drop downs. I already told you what are handling drop downs. Okay, parent child relationship locator to identify the object uniquely. Okay, so guys, let me tell you what's see what's parent and what's like child. See, you guys see this whiteboard. You guys see this whiteboard. This whiteboard is inside this black part, right? So this whiteboard text is actually child of this. Okay, so how to iterate through this, how to come parent to child and vice versa, going child to parent. These are two famous interviews questions that most of the automation testers fail in the interview. Okay, we'll be learning this. Okay, handling auto suggestive drop downs. You guys must have seen, I will show you, this is itself a Google property. Okay, as soon as I will type here something, you guys see this drop down is changing according to text. Okay, you guys see this drop down are changing according to text, and these drop down have do not have any locators. We will see how to automate them as well. Okay, okay, importance of assertions. What are assertions, guys? Assertions are expectations. Basically, assertions are expected result. How to automate something for expected result. We will not just automate things, we will also see if this automation result is matching with our expected result or not. We will also look into this. Okay, handling calendar UI in travel website with Selenium. We will be automating a complete travel website. You guys must have seen like on Go IBO. I will show you. These have a calendar UI. I will show you. I don't want it right now. See, you guys see here. Okay, this has a calendar, right? This has a calendar. We will see how to automate this calendar thing. We will see how to input dates by automating things. Okay, you cannot go and just click on things, right? We will be seeing how to do it professionally, how a good automation experienced automation tester does it. Okay, validating if UI elements are disabled or enabled with the out attributes. Okay, we will be looking into many things. Okay, there is a test case. I will tell you. See, guys, if I click on this, not here, let's see this on Facebook. See, it's Punjabi actually. We did it in the last class. Okay, so now it's in. Once I press the login button, this should disable. This should not allow me to click again second time. Okay, see, this isn't allowing me to click in second time. Okay, okay. So this is how to test these kind of automation features. Okay, we will be learning that too. Validating if UI, we already end-to-end automation. You guys know what's end-to-end testing, right? You guys know what's end-to-end testing. Give me a thumbs up if you guys know it. We will be seeing how to automate end-to-end test cases. Okay, so this will be a complete project of end-to-end automation, don't worry. Handling Java alerts. Have you guys seen that sometimes you enter something and there comes a pop-up, from here comes a pop-up, right? Give me a thumbs up if you have seen this. We will be handling these kind of things in our automation framework. Okay,
And then we will be doing some problems, adding items into our carts for an e-commerce app. Okay, sending array of products. We guys, my Java batch knows we have done arrays and okay, sending array of products to cart for checkout. Okay, ये कैसे करेंगे? How will we taking in multiple products at a time and sending them to cart for checkout process? And we will be building a programming logic for this. Okay, okay, then debugging the code, making our code proper. Once we are writing the code, we do many comments and we mess up the code. But once the things are done, it's working properly. We do debugging and cleaning the code. We will make the code efficient. That if someone else also if look into our code, then he or she understood the code. Okay, fixing the problem of inconsistent locators. Okay, there are many cases when your locators become inconsistent. Code changes regularly on the regular basis, and locators are based on code. Okay, so how to make your locator consistent? Okay, how to make your locator consistent? What is implicit wait? What is explicit wait? We'll be learning all of these things. Okay, then scenarios to automate what should be automated and what should not be automated, and necessity of weights in the wait using an example. Okay, then we will be doing practical examples on implicit weights. Then we will be looking into what is fluent wall and its advantages. You guys won't understand what is fluent wall right now, but we will be doing this. These are very advanced concepts of Selenium. We will be doing these. Okay, building customized methods using fluent wall, practical examples on fluent wall. We will be doing everything in this. You guys, these are advanced topics in Selenium. Techniques to automate Ajax classes, child, windows, and iframes. Right? Iframes, I can tell. See, a web page open in another web page is known as iframe. Sometimes you guys must have seen. Like you guys just see here, before when I just open, the login page appeared over here. That page was in a iframe. You guys remember, right? Okay, so that was a iframe. How to automate these kind of scenarios, handle these kind of scenarios. Okay, then we will be again doing some end-to-end programming. We will be again doing some practical problems. Handling these are miscellaneous concepts. No one will taught you these concepts. How to handle HTTPS certification, these come under security. Okay, we will see explore the options, Chrome options, and different plugins, how to make your coding efficient. Okay, how to delete cookies. We will be learning what are cookies in our manual testing sessions also. But and we will be seeing how to automate deleting cookies and accepting cookies. Okay, you guys have seen this, accept cookies or decline cookies whenever you enter on a new web page, right? So we'll be doing these kind of things. And guys, see, I'm still not able to complete this. Okay, how to take screenshots. Screenshots are very crucial for testing. Okay, screenshot are very crucial for testing, as you all guys know. So whenever a bug has occurred in our automation script, it will automatically take the screenshot and save it in the folder. Okay, and it will give you in the reports. Okay, strategy to automate broken links, open connection methods with status codes. We'll be doing everything. Soft assertions. What are soft assertions? I'll be telling in those sessions. Hmm. How to automate tables. Sometimes you have some data tables in the page. How to automate those. Okay. Invoking multiple windows. You can see there are multiple windows in my laptop right now. How to do these? Automation is usually done in one tab, but this is the advanced and miscellaneous topic. Okay. Taking partial screenshot. Okay. These are some new features that Selenium has recently launched. Okay. Capturing height and width of any element. Okay, then you guys see there are eight parts of framework designing. We'll be implementing different frameworks.
page object model, object oriented principle needed. Okay, page object model, Maven integration, test ng, HTML reports, Cucumber BDD. We'll be also learning Jenkins CI for CI/CD for continuous integration and continuous deployment. These are very advanced topics. And if you are done with all these things, then you can call yourself as SDET. Then you can call yourself as SDET. You can apply for higher packages, 40, 50 LPA, 30 LPA. You can apply for these packages if you know all of these things. Okay, if you know all of these things, then you can apply for higher packages. Give me a thumbs up, guys, if you understood all of the basic things I understood. And guys, all these things you are getting in 599. Guys, this is a three-digit number, 599, that you guys usually spend on Zomato or Swiggy. Okay, this is a very normal price. We are giving this course in the same price we have given manual testing course. Okay, we are giving this course in the same price. So I'm waiting for you guys to see that. Okay, I'm looking forward to see you in the same batch. Okay, you guys will gain a lot of knowledge with this. Okay, so I will be waiting for you guys. And this is one course. Okay, guys, before I move to another course, I just want to know any doubts regarding this course. हेलो सर। Hi, Krishna. हाँ सर, तो पहले सर जावा क्लास स्टार्ट करेंगे क्या सेलेनियम की? Bhai, और Java class is already going on, bro. Java class is already going on. You can talk to Rajat for recordings of Java classes. You can talk to Rajat for recordings of Java classes. Okay, there are Java classes are about to end. Okay, Rajat didn't told you that Java classes are already going on. सर न्यू क्लास कब स्टार्ट होंगे जावा? यार, we are right now not planning for Java batch. बट देखो, जितनी जावा रिक्वायर्ड होगी वो आई एम गोइंग टू टीच इन दिस। ओके, जितनी जावा सेलेनियम के लिए रिक्वायर्ड होगी वो आई एम गोइंग टू टीच इन दिस। ओके, वी विल बी टेकिंग अ मास्टर सेलेनियम के क्लास। लिए सर जावा जावा सेलेनियम के लिए तो आता है सर, क्योंकि कोड के लिए सर यूज करने के लिए तो जावा तो आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आई एम सेइंग, आइदर इफ यू वांट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ जावा, इफ यू वांट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ जावा, Sujit, I guess you are attending Java sessions, right? यस सर। Sujit is attending Java sessions already. Okay, okay, so he knows. We have taught in-depth Java there. Okay, but for just for Selenium batch, I will be taking a master class. Okay, where I will be teaching you the Java which is only required for Selenium. Okay, but if you want to learn in-depth Java is also needed if you want for if you really want to go into good companies like Microsoft, Flipkart. Okay, so you can talk to Rajat for recordings of the Java classes. The prices will be obviously low if you are applying for recordings. Okay, when you are applying for recordings, you can talk to Rajat. Okay, or I will talk, or you can talk to me. I will talk to Rajat. Okay, and Selenium, this is a very advanced course. After going through this course, I'm very sure you guys can apply for 30, 40, 50 LP jobs. Okay, even if you are having this much knowledge as experience, oh sorry, as fresher, if you are having this much knowledge, then you can easily grab a 12 to 15 LPA package in a good company if you are having this in-depth knowledge. So guys, give me a thumbs up if no doubts regarding this course. If you are having any doubt regarding this course, then we can still discuss. सर what is the date of starting this course? Sujit, we are going live for this course on 25th January, the very next weekend. That's why I am telling you guys today. Okay, we are going live for this Already batch. done, already done. Okay, great. We are just for your information, guys. We are going live on 25th January for this course. Okay.
वी आर गोइंग लाइव। ड्यूरेशन। सॉरी, ड्यूरेशन यार देखो, आई एम एमिंग, देखो मैं तुम्हें अगर सही से बताऊं तो वी यूजुअली हैव 4 सेशंस इन अ वीक, राइट? वी यूजुअली हैव 4 सेशंस इन अ वीक, which is compiled up to 4 hours, right? So I am planning 2 hour session in a single day, so that will complete a 1 week course. That clearly means 4 hours in 2 days, and that means 10 to 8 to 10 hours, 8 to 10 hours in a month. So I guess it will be completed within 2.5 months. Okay, we'll be doing everything on weekends. Also, guys, अगर तुमने यहाँ तक भी कर लिया ना, अगर तुमने नॉट यहाँ तक, अगर तुमने एंड टू एंड प्रोग्रामिंग कहाँ गया यार, अगर तुमने एंड टू एंड प्रोग्रामिंग तक भी कर लिया ना, तो बेसिक छोटी-मोटी कंपनीज़ में तुम फोड़ दोगे। 7 से 8 लाख का पैकेज तुम तो भी फोड़ दोगे। और यहाँ तक तो हम पहले 3 या 4 सेशंस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? 3 या 4 और आई गेस 6, 1 महीने में हो जाएगा, मतलब इतना तो। तो 1 महीने के बाद से तुम जॉब अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। ठीक है? ओके, सो वी हैव वन अनदर कोर्स। ओके, वो वो बहुत ग्रैंड कोर्स है और वो अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है। आई एम अनाउंसिंग दिस वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास। ओके, कॉर्पोरेट सक्सेस ब्लूप्रिंट फ्रॉम इंटरव्यूज टू इम्पैक्ट। गाइस, कैन यू सी दिस ग्रीन? आई गेस थोड़ा सा कलर इम्पैक्ट की वजह से प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आई गेस। ओके, तो गाइस ये बहुत बड़ा कोर्स है। ठीक है? ये ये भी वीकेंड्स पे रहेगा, वही सेम 1.5 आवर सेशन फॉर वन क्लास। तो गाइज इसका मैं थोड़ा सा ना तुम्हें आउटपुट वो बताता हूँ, ओवरव्यू बताता हूँ। गाइज, कभी हैव यू एवर फेस द सिचुएशन, इंटरव्यू के लिए कॉल तो आई पर आगे कुछ नहीं हुआ? इंटरव्यू के लिए कॉल तो आई पर उसके बाद दोबारा फर्स्ट राउंड के लिए कॉल नहीं आई, या फर्स्ट राउंड तो हुआ, सेकंड राउंड के लिए कॉल नहीं आई, या फर्स्ट सेकंड राउंड तो हुआ, एचआर राउंड में रिजेक्ट हो गया, या ऐसा कभी हुआ कि यार ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बट बहुत ही कम मिला? ऐसा हुआ है? यस सर। सभी के साथ हुआ होगा। आई गेस एवरीवन हैज फेस्ड दिस सिचुएशन, राइट? यस सर। एवरीवन हैज फेस्ड दिस सिचुएशन, है ना? तो और इस कोर्स की भी जल्दी एनरोलमेंट स्टार्ट होने वाली है। आज आई गेस मार्केटिंग स्टार्ट होने वाली है इसकी। आज पोस्टर्स एनरोल होने वाली हैं वेबसाइट पे। ठीक है? पोस्टर्स भी आउट हो जाएंगे इस कोर्स के। तो और गाइज इस कोर्स की दो खास बातें हैं। पहली बात कि देयर इज अ पैनल, कंप्लीट पैनल। वी आर 2 पर्सन पैनल है हम, जो ये कोर्स में पढ़ाने वाले हैं। वन इज मी एंड अनदर इज माय फ्रेंड, दैट इज कंसल्टेंट इन अ गुड कंपनी। ठीक है? ही हैज वर्क विद गुड कंपनीज लाइक केपीएमजी एंड नेशनल इंस्ट्रूमेंट। ही इज अ कंसल्टेंट। Okay, so he basically is having more knowledge of communication. Okay, so what this actually include, what this course actually include? ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम। इट्स फॉर एवरीवन, चाहे तुम जॉब स्विच करना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो इनटू योर करियर, यू वांट प्रमोशंस इनटू योर करियर, यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, यू आर एक्सपीरियंस, यू वांट टू स्विच योर करियर, तुम किसी और करियर में हो, तुम्हें करियर स्विच करना है। तो इस कोर्स का बेसिक मोटो यही है कि कॉर्पोरेट में सक्सेस कैसे हासिल करनी है। ठीक है? हाउ यू हैव टू मेक अ इम्पैक्ट इनटू योर कॉर्पोरेट लाइफ। तुम्हें अपने आप को आउटस्टैंड कैसे करना है, आउटशाइन कैसे करना है कॉर्पोरेट में। ठीक है? तो we'll be starting with very basic topics. Okay, let me just zoom in bit. ठीक है? तो मैं पहले उसकी बात करता हूँ जो हमारे बैच वाले टॉपिक्स हैं। इसमें 2 एनरोलमेंट्स हैं, 2 पैकेजेस हैं बेसिकली, आई विल से। ठीक है? तो सबसे पहले हम रिज्यूमे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? एटीएस को कैसे पास करना है। पहली बात तो देखो, मैं तुम्हें सच बताऊं तो एटीएस जैसा कुछ होता नहीं है, बट कुछ अच्छी कंपनीज एटीएस भी मानती हैं। ठीक है? तो एटीएस में अच्छी कंपनीज को कैसे पास करना है, देखो, अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली दैट छोटी मोटी कंपनी इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एटीएस। ठीक है? बट कोई बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, गाइज लैक्स में एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है? इट यू नीड अ टूल टू फिल्टर द एप्लीकेशन। ठीक है? ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो हम रिज्यूम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? कौन सी गलतियां करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये बताएंगे। ठीक है? दीज आर बैच टॉपिक्स। ठीक है? और
तुम्हारे रिज्यूम्स को रिव्यू करेंगे लाइव सेशंस में, तुम्हें लाइव फीडबैक्स मिलने वाले हैं, ठीक है? तुमने क्या रिज्यूम बनाया, और ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ छोटा-सा। आज तुम्हें कह दिया कि इतनी जॉब के लिए रिज्यूम बना लो, तुम अपनी जॉब के लिए बना लोगे, ठीक है? अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम्हें रिज्यूम बनाना है एक नॉट जेएस डेवलपर के लिए, तो तुम नहीं बना पाओगे, राइट? यू डोंट नो व्हाट, तो तुम्हें उस पे कैसे आर&डी करनी है, कैसे जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू देना है, मतलब मैं कुछ भी जॉब डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें रिज्यूम कैसे बनाना है। फिर वी विल बी हैविंग अ लाइव रिव्यू सेशन, ठीक है? लाइव रिव्यू सेशन और लाइव फीडबैक सेशन, ठीक है? टेम्पलेट्स, पर्सनलाइज्ड फीडबैक्स। गाइस, बहुत से लोगों का ना यार, जब क्लाइंट डीलिंग की बात आती है ना, स्पेशली इट्स फॉर स्पेशली क्यूए फील्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है? तो जब क्यूए फील्ड की बात आती है ना, क्यूए फील्ड में गाइस डोंट नो हाउ टू राइट ईमेल एंड हाउ टू बिहेव इन मीटिंग्स, ठीक है? हाउ टू बिहेव इन वर्चुअल मीटिंग्स और हाउ टू बिहेव इन लाइव पर्सन मीटिंग्स, राइट? पीपल, लोगों को नहीं पता है ये चीजें, ठीक है? तो इन चीजों को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजें हम सिखाने वाले हैं। प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, हैंडलिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस। बहुत बार ऐसा होता है यार, गलती हो गई, अब गलती एक्सेप्ट भी कर ली है, अब पता नहीं था एक्सेप्ट करनी थी या नहीं करनी थी, कॉन्वर्सेशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे हो मैनेजर को या टीएल को, किसी को भी, ठीक है? हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। मैनेजिंग वर्चुअल कम्युनिकेशन, वी ऑलरेडी टॉक। रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस वी विल बी डूइंग। रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस समझते हो? बहुत बार ना, बहुत सी कंपनीज में ना ऐसा होता है कि तुम्हें बोल दिया जाएगा कि तुम, यू आर द प्रोडक्ट ऑनर, ठीक है? जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि प्रोडक्ट ऑनर क्या हो। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस, विल बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू दिस, ग्रुप डिस्कशन, डिबेटिंग एक्सरसाइजेस, रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस, बहुत अलग अलग तरह की रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस विल बी डूइंग इनटू दिस, ठीक है? क्राफ्टिंग प्रोफेशनल ईमेल्स ऑलरेडी बताया, कॉर्पोरेट मैनर्स एंड एटिकेट्स, वही बात है। प्रोफेशनल बिहेवियर, वर्कप्लेस एथिक्स, कैसे वर्कप्लेस पे रहना है, ड्रेसिंग सक्सेस, ठीक है? बहुत से लोगों को यार कॉर्पोरेट में ड्रेसअप ही नहीं होना आता है, ठीक है? तो देखो, स्टार्टअप जैसी कंपनीज में तो कुछ भी नहीं है ड्रेसअप का, बट तुम अच्छी कंपनीज में, इफ यू आर गोइंग इनटू अच्छी कंपनीज, गुड कंपनीज, ठीक है? देन गाइस यू नीड टू हैव अ ड्रेसिंग सेंस, ठीक है? यू नीड टू हैव अ ड्रेसिंग। तो उस ड्रेसिंग सेंस का क्या कोड होता है, वो कोड हम देखेंगे, ठीक है? मीटिंग एटिकेट्स, नेटवर्किंग टिप्स। गाइस, वो एक जोक पड़ा है यार लिंक्डइन पे कि नेटवर्क ऐसा बनाओ कि इंटर रेफर करने वाला भी दोस्त हो, नेटवर्क बनाने वाला भी तुम्हारा नेट, मतलब कनेक्शन हो, और एचआर भी तुम्हारा कनेक्शन हो। वो थॉट पढ़ा है किसी ने लिंक्डइन पे? गिव मी अ थम्स अप अगर वो थॉट पढ़ा है तो। तो इस टाइप की नेटवर्किंग करनी कैसे है, इस टाइप की नेटवर्किंग कैसे करनी है? मेरा लिंक्डइन जाके देखोगे ना, तुम्हें दिखेगा मेरी इस टाइप की नेटवर्किंग है, ठीक है? तो इस टाइप की नेटवर्किंग कैसे करनी है? मॉक मीटिंग्स, हम मीटिंग्स को मॉक करेंगे। मॉक मीटिंग समझते हो, जैसे मॉक इंटरव्यूज है, हम वैसे मॉक मीटिंग्स करेंगे। मीटिंग्स में कैसे बिहेव करते हैं, वी विल बी डूइंग वर्चुअल मीटिंग्स, ठीक है? मतलब वी विल बी सिमुलेटिंग, तुम्हें कुछ रोल दे दिया, मुझे कुछ रोल दे दिया, तो मीटिंग्स कैसे करनी है, वो सब चीजें करेंगे हम, ठीक है? केस स्टडीज, बहुत बार ऐसा होगा गाइस कि तुम्हें किसी भी टूल के लिए या फिर किसी भी नई चीज के लिए, किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ नई टर्मिनोलॉजीज की आर&डी करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, केस स्टडीज करनी पड़ेंगी। वी विल बी टीचिंग यू हाउ टू डू दीज थिंग्स, ठीक है? हाउ टू डू दीज थिंग्स एंड हाउ टू रिसर्चिंग द कंपनी एंड रोल। किसी भी कंपनी में बैठने से पहले, मैंने हजार बार बोला है, उस कंपनी की रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, ठीक है? उस कंपनी की रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। एंड गाइज, आई एम प्रो एट इट। मुझे पता है हाउ टू डू दिस, किसी कंपनी का काला चिट्ठा सफेद चिट्ठा कैसे निकालना है, ठीक है? वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग इनटू दिस, ठीक है? स्ट्रक्चरिंग योर आंसर्स विद स्टार एंड कार टेक्निक्स, तो बहुत फेमस चीजें हैं, इंटरव्यू में आंसर करने के तरीके हैं ये भी, ठीक है? तो ये भी हम पढ़ेंगे यार, ठीक है? नहीं पढ़ेंगे नहीं हम, दिस इज, गाइस, ऑल ऑफ दिस कोर्स हैज नथिंग टू डू विद स्टडी। वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली, ठीक है?
Or this course, I am very sure if you are done with this course, guys, your confidence will be touching the sky. Your confidence will be touching the sky. There will be nothing like you have not done. कॉर्पोरेट में जाने से पहले तुम्हें कॉर्पोरेट का सब आ जाएगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस. कॉमन एंड बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैनेजिंग नर्व्स एंड हैंडलिंग टफ सिचुएशन. गाइस, कभी ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू में पसीने आने लग गए हैं या कम कभी छूट गई है? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, आई गेस. वी विल बी लर्निंग हाउ टू हैंडल दीज सिचुएशंस. ऑलराइट. सैलरी नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज, हाइक कैसे लेनी है, मॉक इंटरव्यूज विद फीडबैक्स. ठीक है गाइस, अभी यू नो द रूल कि किसी भी बैच के लिए तुम्हें दो मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, पर इस बैच में मॉक इंटरव्यूज ज़्यादा हैं, और अगर तुम्हें उससे भी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए एक और बैच है. तो अभी वी विल बी इनिशिएटिंग दैट. पर्सनल ब्रांडिंग, अपने नाम को एक ब्रांड कैसे बनाना है. ठीक है, गूगल पे जाके निखिल लिखोगे ना, निखिल सेडाना लिखोगे ना, मेरी फोटोज आ जाएंगी. ठीक है, और मेरी फोटोज फेसबुक या कहीं और से नहीं आएंगी, मेरी फोटोज आएंगी लिंक्डइन से. ठीक है. हाउ टू मेक योर सेल्फ अ पर्सनल ब्रांड. अपने नाम को ब्रांड कैसे बनाना है कि तुम्हारे नाम से तुम्हें लोग जान जाएं. ठीक है. लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है विजिबिलिटी के लिए. ठीक है. देखो, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, गूगल, फ्लिपकार्ट, ये तुम्हारे रिज्यूम्स नहीं देखती, ये तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल देखती है. तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल में कितना दम है. ठीक है. तो ये कैसे करना है, ये सीखेंगे. अगर तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इम्पैक्टफुल कैसे बनाना है, खुद पे डिपेंडेंसीज कैसे लेकर आनी है. शोकेसिंग योर एक्सपर्ट थ्रू, दिस इज ऑल्सो लिंक्डइन पार्ट. ठीक है. तो यूजुअली तुमने देखा होगा यार, मैं लिंक्डइन पे ब्लॉग्स पोस्ट करता रहता हूँ अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड, जो भी मुझे लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ है, शेयर करनी चाहिए अपनी नॉलेज. ठीक है. शेयरिंग योर नॉलेज थ्रू कंटेंट क्रिएशन, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट, पर्सनल ब्रांडिंग रोड मैप, सेटिंग एंड अचीविंग करियर गोल्स. बहुत लोग ऐसे हैं भाई जिन्हें अभी तक अपना करियर गोल ही नहीं पता है. ठीक है. तो करियर गोल कैसे सेटअप करना है, कैसे अपना करियर गोल फाइंड आउट करना है, कैसे उसे अचीव करना है. अंडरस्टैंडिंग वर्कप्लेस डायनामिक्स, नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी हैक. दिस इज समथिंग वेयर एवरीवन फेल्स, and we will be learning how to do this. We will be implementing how to do this. ठीक है guys. Dealing with feedbacks and conflicts. बहुत बार होगा अच्छे फीडबैक्स मिलेंगे, बहुत बार होगा नेगेटिव फीडबैक्स मिलेंगे. बहुत बार ऐसा होगा यार, 2 इंटरव्यू दिए, 3 इंटरव्यूज दिए, 4 दिए, सब में फेल हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो यार, और इंटरव्यूज देने का मन ही नहीं कर रहा. होता है ना. We will be looking how to handle demotivation, how to face rejection, how to face rejection. This is one of the core part, guys. This is one of the core part of this course. अपनी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के ग्रो कैसे करना है. देखो, स्विच करके तो ग्रो कर ही सकते हो, बट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल्टी दिखाकर कैसे ग्रो करना है, ये देखना है. गोल सेटिंग वर्कशॉप, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस. ठीक है. तो दीज आर समथिंग, फ्यू थिंग्स गाइस, जो बैच के अंडर आती हैं. ठीक है. दीज कम अंडर बैच. एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ बैच? Just 999. This is the price of batch, and this is a not just one go batch. ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार में 2 या 3 महीने में खत्म हो जाए. This batch will go for long. You can expect a 6 month of training from this batch, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स. ठीक है, समझ रहे हो. तो this is, I know, the prices are bit higher than our other batches, but this is one of the special batch, this is one of the most special batch that I am personally attached with. ठीक है. We are going to I have like given many sessions for these kind of things, but so this is one of the area where I specialize. टेस्टिंग से ज्यादा मेरी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है. एंड यू गाइज मस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग. मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे बिहेविंग एटिकेट्स, यू नो दीज थिंग्स अबाउट मी, राइट? एंड ट्रस्ट मी गाइज, द अदर पर्सन इज मोर गुड देन मी हु विल बी टीचिंग. ओके. सो this is topics for the batch. This is for the combined class. And the other package
द अदर पैकेज वी आर हैविंग इज पर्सनल मेंटरशिप. अब गाइस पर्सनल मेंटरशिप में क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट्स इन द पर्सनल मेंटरशिप. गाइस ये हमारा पर्सनल मेंटरशिप है. गाइस इसमें ना हर चीज की पर्सनल असिस्टेंस है. देखो गाइस, यू गाइस विल बी हैविंग, इफ तुम पर्सनल मेंटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास. एक्चुअली तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस हैं. या तो तुम सिर्फ बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तुम सिर्फ पर्सनल मेंटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, the batch and personal mentorship cost is same 999, but if you are applying for both batch and personal mentorship, then the price is 1499. Okay, the price is 1499. Okay, देखो 1499 एंड 1499 इज फॉर बोथ द पर्सनल मेंटरशिप एंड बैच. ओके, तो इसमें क्या है यार कि पर्सनल मेंटरशिप में टॉपिक्स अलग हैं. ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप में बैच वाले टॉपिक्स नहीं है. तो पर्सनल मेंटरशिप में टॉपिक्स अलग हैं, पर पर्सनल मेंटरशिप मेरे लिए, मुझे मुझे ऐसा लगता है भाई कि दिस इज द मोस्ट एडवांस थिंग जो तुम्हें लेनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि प्राइस हायर है, क्योंकि देखो बैच वाले टॉपिक्स बेसिक है, वो तुम्हें सीखने ही सीखने. बट ये पर्सनल मेंटरशिप, दिस इज समथिंग वेरी एडवांस गाइस, दिस इज समथिंग वेरी एडवांस. ओके, दिस इज समथिंग वेरी एडवांस जो हम सीखने वाले हैं. ठीक है, यहाँ देखो लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, मेंटरशिप, ये तुम्हें यार कोई एक्सपीरियंस बंदा ही सिखा सकता है, जिसको खुद एक्सपीरियंस हो. ठीक है, ये चीजें हैं. कल्टीवेटिंग रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हो, अडेप्ट कैसे करना है कल्चर को, ये चीजें यार उसी को वही बता सकता है जिसने बहुत सारी कंपनीज में काम कर दी है. ठीक है, हाउ टू फेस रिजेक्शन, ये टॉपिक भी हमारा बैच में है, पर एडवांस में यार देखो, कभी कभी होता है ना, एक होता है कि यार तुम सभी जगह से तुम्हें सबके साथ कंसोल्डेंस मिल रही है. ठीक है, एक होता है तुम्हें मैं समझा रहा हूँ कि हाउ टू नॉट गेट डीमोटिवेट. एक होता है यार जब तुम मुझसे पर्सनली बात करोगे ना, तो पर्सनल मोटिवेशन अलग ही होता है. समझ रहे हो? यू गाइस गॉट इट राइट? हाउ टू हैंडल द फीडबैक्स, हाउ टू हैंडल फेस द रिजेक्शंस. तो पर्सनलाइज करियर प्लानिंग. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग. गाइस बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां तुम्हें इमोशंस से हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को, जहाँ तुम्हें इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा. तो इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे काम लेना है, ये भी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर है. ये बहुत एडवांस टॉपिक है, बहुत एडवांस. ठीक है, अगर किसी को, इफ समवन वांट्स कि यार पहले दिन से ही अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में अच्छा करना है, तो उस बंदे को पर्सनल प्लस बैच लेना चाहिए. ठीक है, दिस विल बी द मोस्ट समथिंग जो किसी को करनी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ओवरकमिंग इम्पोस्टर सिंड्रोम. कभी कभार यार गाइस ऐसा लगने लगता है ना यार मैं ही गलत हूँ. कोई तुम्हें कुछ आके बोल देता है यार शायद मैं ही सही नहीं कर रहा हूँ, मैं ही गलत हूँ. कॉन्फिडेंस का लैक, राइट? इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं इसे. ठीक है, मेडिकल टर्म्स में इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं. तो इसे ओवरकम कैसे करना है, हाउ टू ओवरकम दिस, खुद में इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाना है कि सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत से लोग यहाँ पर है, निकेत निकेत पता नहीं क्लास में नहीं है. ही इज वन ऑफ द पर्सन जो मैंने देखा है जो सेल्फ डाउट करता रहता है हमेशा खुद को. उसका ना, मुझे उसका पर्सनली वो इंटरेक्ट करता है क्लास में, मुझे लगता है कि ही कैन डू गुड. ठीक है, बट उसे पता नहीं क्यों खुद पे सेल्फ डाउट है कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है. ठीक है, तो इस सिंड्रोम को ओवरकम कैसे करना है, ये चीजें करने वाले हैं हम यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप में. टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट. ठीक है, एक होता है टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, एक होता है टाइम एंड प्रायोरिटी. प्रायोरिटी में तुम्हारी फैमिलीज भी आती हैं. ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं. ठीक है, तो ये कैसे करना है, फैमिली और काम को एक साथ बैलेंस कैसे करना है. अपने अपने अगर तुम्हारा वर्क कल्चर टॉक्सिक है अभी, तो उस टॉक्सिकनेस को खुद से दूर कैसे रखना है, ये सीखने वाले हैं हम यहाँ पर. ठीक है, वर्क प्लेस पॉलिटिक एंड पावर डायनेमिक्स. पावर डायनेमिक्स समझते हो? जिसके हाथ में पावर है वही राजा है. ठीक है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, बहुत से लोग पॉलिटिक्स का शिकार हुए होंगे ऑफिस में, बहुत से नहीं हुए होंगे, बट वर्क प्लेस पॉलिटिक्स इज ट्रू. एंड बहुत से लोग यार डिप्रेशन में चले जाते हैं इस पॉलिटिक्स के चक्कर में. दिस इज व्हाई आई वांट एवरीवन टू लर्न दिस टॉपिक. ठीक है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स एंड पावर डायनामिक्स. डेवलपिंग नेगोशिएशन स्किल्स, यहाँ कुछ मैं अपने पर्सनलाइज तरीके शेयर करने वाला हूँ भाई, कि अगर कहीं से भी काम नहीं बन रहा है तो इन तरीकों से जरूर बनेगा.
कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यार बहुत बार ना ऐसा होगा कि भाई कभी तुम अपने मैनेजर्स की बात से एग्री नहीं कर रहे होगे, कभी डेवलपर्स की बात से एग्री नहीं कर रहे होगे, मतलब कभी अपनी टीममेट से एग्री नहीं कर रहे होगे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कैसे करना, हाउ टू हैंडल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? व्हाट एल्स वी हैव? सेल्फ एडवोकेसी इन वर्क प्लेस, खुद को भाई सेफ कैसे रखना है, सेल्फ एडवोकेसी, खुद का वकील खुद बनो, राइट? ये चीजें कैसे करनी है? बिल्डिंग रेसिलियंस अगेंस्ट बर्नआउट। बर्नआउट समझते हो गाइस? जब डिप्रेशन में जाने लगोगे ना, दैट इज कॉल्ड बर्नआउट। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, और जब तुम एक बहुत डीप लेवल पे आ जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा यार आई एम इनटू डिप्रेशन। तो इस डिप्रेशन को पहले से ही दूर रखने वाला भी पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है? ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल। ट्रांसलेटिंग ट्रांजिशनिंग इनटू लीडरशिप रोल्स, ठीक है गाइस? व्हेनेवर यू विल बी एंटरिंग, तुम फ्रेशर्स की तरह एंटर करने वाले हो, तो इसके बाद लीडरशिप रोल, सीनियर मैनेजमेंट में कैसे घुसना है, ठीक है? मास्टरिंग वर्कप्लेस फीडबैक, फीडबैक्स को कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर कोई फीडबैक पॉजिटिव है तो उसमें तुम और क्या पॉजिटिव थिंग्स ऐड कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है यार, तुम्हें अच्छा फीडबैक मिल रहा है और तुम अच्छा करने के चक्कर में ना अच्छे अच्छे के कॉन्फिडेंस में कुछ गलत कर बैठते हो। तो इन चीजों को कैसे हैंडल करना है? effective collaboration with multicultural team, guys. If you are into IT, specifically I am talking about IT, ठीक है? You guys have to collaborate with many teams, development team, QA team, project management team, many teams, right? HR team, any teams, guys, logistic teams. You guys have to interact with different teams when you are into corporate, specifically, ठीक है? So you guys have to do a lot of things. क्राइसिस मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्व। अब गाइस क्राइसिस किसी भी तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, और भी तरह के क्राइसिस हो सकते हैं। इन्हें कैसे मैनेज करना है, ठीक है? तो और ये पर्सनल मेंटरशिप, दिस पर्सनल असिस्टेंस इज नॉट समथिंग बैच टाइप। तुम्हें पर्सनल असिस्टेंस मिलेगी भाई फॉर द नेक्स्ट 2 years। तुम कभी भी अगले 2 साल में, इफ यू आर एनरोल्ड इनटू दिस बैच, तो अगले 2 साल में जब भी तुम, कभी भी तुम हमें, व्हेन यू कैन एनी टाइम कॉल एनी वन ऑफ अस, रजत, मी और द न्यू पर्सन, तुम कॉल कर सकते हो और हमसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है? रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, you can anytime call or you can schedule a meeting or an appointment. You can turn us any turn to on turn us to any time, right? Okay, guys. So any doubts regarding these? Oh, हाँ, one of the thing, communication thing is already into the batch thing. Okay, communication वाला batch में ही आ जाएगा। एंड ऑल दीज, ये कुछ हाई लेवल टॉपिक्स हैं, एडवांस टॉपिक्स। और आई गेस ये पर्सनल मेंटरशिप वाले टॉपिक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? और एक चीज यार, देखो, ये जो प्राइजेस मैंने तुम्हें बताई ये ज़्यादा टाइम के लिए वैलिड नहीं है। स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी हमारे बैचेस में एनरोल्ड हैं, ठीक है? तो 2 साल इज नॉट अ शॉर्ट टर्म पीरियड, 2 years इज नॉट अ शॉर्ट टर्म पीरियड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? तो 2 साल शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं होता है, और 2 साल के लिए 1500 रुपये आई गेस कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो डोंट डिस्क्लोज दीज प्राइजेस। अगर कोई लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एनरोल कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्राइजेस हैं, ठीक है? 26 जैन तक हमारे डिस्काउंट्स ओपन है, सॉरी 25 जैन तक हमारे डिस्काउंट्स ओपन है। एज सुन एज 25 जैन विल पास, these discounts will shut down, okay? Prices will go high, and same is for the selenium। selenium के लिए you guys have next 2 or 3 days, ठीक है? तो selenium में भी जल्दी एनरोल कर लो जिसने भी करना है, ठीक है? जावा की अगर किसी को रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो ही और शी कैन टॉक टू रजत। रिकॉर्डिंग्स मेरी ही हैं, मेरे ही लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, ठीक है? तो अगर कुछ डाउट है तो रिकॉर्डिंग वालों के लिए डाउट सपोर्ट भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है? तो एनी डाउट्स गाइस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सक्सेस ब्लूप्रिंट और सेलेनियम कोर्स? कुछ भी डाउट है किसी को भी? नो सर। ओके, तो आई गेस वी कैन वाइंड अप, ऑलरेडी बहुत लंबा खींच लिया आज मैंने, ठीक है? तो ओके गाइस, सी यू। सर
हाय सर एक विभूति। क्वेश्चन था। हाँ विभूति पूछो। सर एक्चुअली मैं लास्ट क्लास थोड़ा अटेंड नहीं कर पाया था, थोड़ा पर्सनल रीजन था। तो मैनुअल का एक्चुअली राइट। लास्ट क्लास का, हाँ, तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग कुछ मिल सकता है क्या, रिकॉर्डिंग? You are not into added into drive. एक्चुअली मुझे मेरा वो लिंक नहीं मिल रहा है मुझे एक्चुअली। ठीक है यार, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं यार, मैं दोबारा से ग्रुप में शेयर ठीक है, करता हूँ, नो वरी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ओके, सर। उसमें पिछले 5 सेशन की रिकॉर्डिंग और नोट सब मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके।